Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum, my dear students, and I hope you all are fit and fine at your home. Dear students, here is your English teacher Miss Nushat, and students, as you know, we have completed our first unit, reading of first unit. I have English book, GABA English for grade 7. Please take out your English books. We have completed our reading of this unit. And today we are going to start our written words meanings. Okay, take out your English copies. This is your English copy, and student, this is our 7th lecture of class 7. The title of the chapter is The Coming of Spring. We have words meanings. First question is words meanings. First word is cheer, happiness. Second word is pretty, beautiful, blooms, flowers, peep out, to come out, unfold, to open up, serenade, to entertain with music or with song. Sorry, music not, with song. Forsythia, a plant with yellow flowers. ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे पास लास्ट वर्ड है फॉर्सेथिया, अ प्लांट विद येलो फ्लावर्स. आप बुक्स खोलें, उसमें भी आपको इस फ्लावर की बाकायदा पिक्चर दी हैं. ये हमारे पास बुक पेज नंबर 1. यहाँ पे देखें, ये जो येलो फ्लावर्स बने हुए हैं, येलो फ्लावर्स, ये है फॉर्सेथिया. ये कौन सा प्लांट है? ये फॉर्सेथिया है. यहाँ पे जो येलो प्लांट्स वाले फ्लावर्स वाले प्लांट्स होते हैं, उनको कहते हैं फॉर्सेथिया. ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऐसा करना है, जब आप लोग रिटन वर्ड स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप लोगों ने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. जैसे कि हम लोग हर वीडियो में आपको यही बात करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. उसके बाद डेट और डे मेंशन करना होता है. इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आपने मेंशन करना होता है. फ़र्ज़ करें इंग्लिश हैं, तो आप लोगों ने इंग्लिश है यहाँ पे मेंशन करना है, CW मेंशन करना होता है, और उसके बाद आपने टाइटल लिखना होता है, जो टॉपिक का टाइटल होता है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.